So today's topic is regarding Parthenium Pysterophorus. It is coming under Part A of Agaritantra among the noxious plants, noxious original mineral drugs के group में जो आते हैं Parthenium Pysterophorus. It's not so important, but still it is a weed which is commonly seen everywhere. That's why this is importantly used mainly for the farmers or the famine land and all. This has a national significance this week. So it is coming under the family Asteraceae. भृंगराज का जो फैमिली जो होते हैं ऐसा रॉसेट शेप्ड फ्लावर्स भी हो जाते हैं बुके जैसे whitish color और फिर it has a deep penetrating taproot system and an erect shoot system also and it is native to American tropics. Mostly हमारे इंडिया में जब famine हो गया था वहाँ पे क्रॉप प्रोडक्शन वगैरह नहीं मिल रहे थे, लोग बुखार से मर रहे थे उस टाइम. फ्रॉम अमेरिका देयर केम अ ट्रक एंड a big load of wheat and that wheat came together with this wheat, यानी कि उस प्लांट्स नॉक्सियस प्लांट्स के वजह से ये सब इंडिया में आ गया था. The common names था Santa Maria feverfew, white top weed and famine weed. लोकली कैरेट ग्रास या फिर कॉन्वर्स ग्रास या फिर गाजर गैंस भी बोलते हैं. अवेलेबिलिटी इन इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड पार्ट्स ऑफ अफ्रीका. इन्वेड्स द डिस्ट्रीब्यूटेड लैंड इंक्लूडिंग रोड साइड्स, यानी पे रोड साइड्स में या फिर बहुत खेती वगैरह में भी ये सब दिख जाते हैं. फर्स्ट ये एक प्लांट होके इन्वेड करने आते हैं, बाद में जगह जगह पे ये प्लांट होते हैं और फिर कंटामिनेट करते हैं, उस क्रॉप प्रोडक्शन को सप्रेस करते हैं. प्लांट प्रोड्यूसेस केमिकल, यानी कि एक केमिकल्स पार्थेनिन एक्टिव प्रिंसिपल है इसका. ये एक्टिव प्रिंसिपल पार्थेनिन की वजह से क्रॉप प्रोडक्शन सप्रेस हो जाते हैं और फिर पास्टर प्लांट्स एलर्जेंस इफेक्ट भी ह्यूमंस पे हो जाते हैं और फिर लाइफ स्टाइल यानी कि कैटल्स को भी ये इफेक्ट करते हैं. पोलन एलर्जीज मोस्टली सीन इन ह्यूमंस. यूजेस आर मेनली फॉर रिमूविंग हेवी मेटल्स एंड डाइज फ्रॉम एनवायरनमेंट, कंट्रोल ऑफ द एक्वाटिक वीड्स एंड द कमर्शियल एंजाइम प्रोडक्शन के लिए. इनकी पार्थेनिन एक्टिव प्रिंसिपल की वजह से एक एंजाइम प्रोडक्शन विच इज वेरी मच यूजफुल इन द बायोगैस प्रोडक्शन एंड ऑल, इट इज वेरी मच यूज्ड. दैट इज बायोगैस, बायोपेस्टिसाइड, ग्रीन मैन्योर एंड कंपोस्ट. Next, effect is mainly dermatitis is seen on the human skin. Dermatitis symptoms, respiratory malfunctions is the main symptoms which is seen only in humans. Mainly in the animals it is seen as dermatitis in slight conditions. Also in domestic animals also it is seen. Cattle also the dermatitis symptoms are seen. Bitter milk disease. अगर ये fodder अगर खा लिया है, आपने जो cattles वगैरह खा लिया है जिसमें पार्थेनिन है, उसकी वजह से वो मिल्क प्रोडक्शन जो है, मिल्क जो प्रोड्यूस होता है, इनको बिटर टेस्ट आ जाते हैं, इसलिए बिटर मिल्क डिसीज भी बोल जाते हैं पार्थेनिन की वजह से. और फिर इनहिबिट फ्रूट सेट इन टोमेटो, ब्रिंजाल, बीन्स एंड फिर अदर क्रॉप प्लांट्स में इनका फ्रूट प्रोडक्शन नहीं हो जाते हैं. और फिर अगर फ्रूट प्रोडक्शन नहीं हो जाते हैं वहां पे क्रॉप प्रोडक्शन बहुत डिमिनिश्ड हो जाते हैं. और फिर एक्टिव प्रिंसिपल पार्थेनिन है वो डेंजरसली सकती है. And the control, mostly the control is with hand labor weed removal. Hand labor यानी कि अपने हाथों से रिमूव करके वहां से, but it is mostly time consuming and very less time is only utilized for that one. Other ways, if it is a very big area, sprays can be utilized. Biological control may be used. It is a human health enzyme. For the humans, it is highly toxic, mainly for the dermatitis and respiratory condition, and then even in the severe respiratory malfunctions, even a person's death can also happen. Severe allergic dermatitis and respiratory problems, and it is an annual herbaceous plant. Annually, you will see the plant. Annually, it is a herbaceous plant, commonly known as Parthenium. वीट ऑफ ग्लोबल सिग्निफिकेंस है. मैंने जो बोला है कि यानी कि अमेरिकन एरिया से वीट के साथ ये वीड इंडिया में आ गए, बाद में ये पूरा फैल गया था. ऑस्ट्रेलिया में वीड ऑफ नेशनल सिग्निफिकेंस भी बोलते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में 1930s में एक ये वीड की वजह से उनका क्रॉप प्रोडक्शन वगैरह बहुत सप्रेस हो गया था और फिर उनके कैटल्स भी इनकी वजह से मिल्क प्रोडक्शन उतना तक नहीं हो रहा था, इसलिए इसको वीड ऑफ नेशनल सिग्निफिकेंस बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया. पार्थेनियम, इसलिए पार्थेनियम फर्स्ट आइडेंटिफाइड भी ऑस्ट्रेलिया में है. डॉक्सिस प्लांट और फिर डीप पेनिट्रेटिंग टैपरूट सिस्टम एंड इरेक्ट शूट सिस्टम भी है. यंग प्लांट्स जो रोसेट जैसे बुके जैसे हो जाते हैं, close to the soil surface it is mainly seen. Mature होने के बाद develops many branches on the upper half और फिर it branches करके जाते हैं, बाद में उसमें फूल भी आ जाते हैं. It is similar to a rosette or the bouquet.
or it has an ability to germinate and establish any time of the year. यानी कि annual herbaceous plant का मतलब यह है कि it can arise at any time of the year and it invades the whole area. And the flowering is 6 to 8 weeks after germination. Good seed producer, यानी कि 15,000 seeds in a lifetime भी हो जाते हैं. Hysteria means womb and it is a resemblance to carrot grass, gajar grass भी बोलते हैं. If it is used in the well and good conditions, it is used in the medical conditions, skin inflammations, rheumatic pain, diarrhea, UTI, dysentery, malaria, and the neuralgic conditions also. And prolonged contact causes asthmatic condition, that is a respiratory malfunction, which is already told there. Nasal, dermal, and nasal bronchial diseases भी हो जाते हैं. You can see the picture there. It is mainly the weeds. Because of that, the seeds which is affecting all the crop production, and again the crop production is even the young germinating plants are also affected. That is the picture which is shown here, which is affecting the globally crop production of whole year. Yani it is considered as a farmer's tears because all the hardships of farmer will go with a single weed like this.